अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये ज़ुबान ज़द आम था कि ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार साहिबान के दरमियान कुछ अच्छा नहीं। इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि इक़्तिदार में आते ही जो दीगर ग्रुप हैं उनको मिज़ान पर परखा जाएगा, जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए तो वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने असद उमर साहब पर हुकूमत के मुकम्मल एतमाद के मोहर लगाने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब के हवाले से शेख रशीद के रिमार्क्स ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। अब शेख रशीद साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर इत्तलाआत बनने की पेशकश की। अब फवाद चौधरी साहब ने इस पर रद्द अमल दिया कि वो शेख रशीद साहब के लिए वजारत छोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी मामला उन दोनों के दरमियान ही था कि शेख रशीद ने यू टर्न लिया और कहा फवाद चौधरी साहब तो मेरे भाई हैं, अब उनकी वजारत नहीं ले रहा। मीडिया पर बयानात अपनी जगह, मगर क्या हुकूमत के जो वज़रा हैं वो एक पेज पर हैं कि नहीं? क्या शेख रशीद वज़ार इत्तलाआत के उम्मीदवार तो नहीं? और अगर ऐसा है तो मुस्तकबिल में किस किस की वजारत जाने वाली है? क्या एहतसाब के एजेंडे पर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत अंदरूनी लड़ाइयों की मुतहम्मल हो सकती है? अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे एंटी करप्शन के दिन पर और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कारकर्दगी पे। जनाब, अगर इस पे आए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पे, सबसे पहले सर आपको याद होगा एक बहुत बड़े सियासी शख्सियत हामिद नासिर चट्टा साहब ने एक बार फरमाया, बहुत एक पुराना उनका इंटरव्यू है, कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अव्वल तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जब चट्टा साहब खुद मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे तो उनकी ओपिनियन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। ये जो वजारत है जनाब, अब एक बहुत अहम किरदार अदा करती है और उसके जो इख्तियारात हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको इजाफा देखने को मिला है। ये जो अब आपको एक बहस नज़र आ रही है, चलें शेख रशीद साहब भी साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फवाद चौधरी साहब इज़ फर्स्ट टाइम फेडरल मिनिस्टर। जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी इसके पीछे एक एडवर्टाइजमेंट माफिया है, और बहुत आपके सर साथी हैं मीडिया में जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस मौजू पे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्या राय रखते हैं? जनाब, एक तो पहले मैं आपने देखा होगा कि शेख रशीद साहब ने कल उसके बाद थोड़ा सा इसको फेस सेविंग के तौर पे उनको कॉल भी किया और इस परसेप्शन को धोने की कोशिश की कि शायद वो कोई चौधरी साहब को हटाने की कोशिश के पीछे है। लेकिन मैंने आज थोड़ी बहुत जो अपनी खुद से इस मामले को वाकई ही फवाद चौधरी साहब के खिलाफ कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई तहरीक चल रही है। अब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप फवाद चौधरी साहब के मैसेजेस भी पढ़े और जो मुख्तलिफ वीडियोस उन्होंने इंटरव्यूज़ या साफ़ियों से बात की है, ट्वीट्स देखी हैं, तो इस चीज़ पे वो डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन मेरी खुद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ का कहा कि जनाब कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा, ये फवाद चौधरी की जो स्टोरी के 2-3 मुख्तलिफ एंगल्स हैं। एक तो अगर आपको याद हो कि फवाद चौधरी के जो रिलेशनशिप है अपने कैबिनेट कोलीग्स के साथ, वो भी कोई अच्छा नहीं है। जब ये चेयरमैन सेनेट के साथ उनका शो डाउन हुआ था तो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है अली मोहम्मद साहब, उन्होंने उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया सेनेट के फ्लोर पे जाके। ठीक है, आप वो आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि थोड़ी सी एक कैबिनेट के अंदर भी चल रही है। दूसरी, हुकूमत की कारकर्दगी। अब इन्होंने खुद से अपने ऊपर एक मार्कर तो लगा दिया 100 डेज का कि जी हम इसमें डिलीवर करेंगे, ये कर देंगे, वो एक आपने एक्सपेक्टेशंस आसमान पे पहुंचा दी। लेकिन सबके सामने है कि वो एक क्राइसिस से उठ के दूसरे पे जा रहे थे। तो इस वक्त एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कर सकता था? तो लेकिन सवाल जाहिर बात है, ये फवाद चौधरी साहब ने खुद भी कहा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे ही आता है कि जनाब कारकर्दगी को भाई सेल करो लोगों के सामने और करो। जो तीसरी बात आपने की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चंद दिन पहले या शायद हफ्ता डेढ़ पहले की बात है, फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था एक और टीवी चैनल पे, वो एक टॉक शो में थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये जो 100 डेज का एड है गवर्नमेंट का, ये रिलीज होने के हक में नहीं था, लेकिन हो गया। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ये एक पूरी कैंपेन होती है, ये नहीं कि एक अखबार को ऐड दे दिया। तो अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो इसका मतलब है कोई उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी काम कर रही है। लेकिन जो असल जो अब चीज जहां पे मैं आपको बात कर रहा था कि फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मूव तो हो रही है,
हो ये रहा है कि जब पीटीआई को क्रिटिसिज्म का सामना होता है और पीटीआई की 22 साल ऑपोजिशन में रहने के बाद थोड़ी सी जिनको आपको पता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जब कोई पार्टी ऑपोजिशन में होती है तो आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि मीडिया का एटीट्यूड उनके हक में बायस्ड होता है कि वो हमेशा ऑपोजिशन के पर्सपेक्टिव को बढ़ा चढ़ा करने, उस वक्त उनसे सवालात नहीं पूछे जाते। लेकिन अब जब वो हुकूमत में है तो सवालात पूछे जा रहे हैं, तो वो फवाद चौधरी साहब पे प्रेशर डालते हैं कि जी मीडिया को कंट्रोल करें। आज का मीडिया कंट्रोल नहीं हो सकता। जब ये डिबेट चलती है ना पार्टी के अंदर, तो मुख्तलिफ लोग जो ये इस चीज को पुश कर रहे हैं वो अपनी कैंडिडेचर भी आगे ले आते हैं। वो सारा ठीक है बाकिर साहब, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज का मीडिया कंट्रोल नहीं हो सकता, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक ऑप्टिमिस्टिक राय है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2002 के बाद से जो सफ़र आपने किया है वो एक बहुत तवील सफ़र था, और एक आज़ादी इजहार आज आपको उस तरह का आज़ादी इजहार देखने को मिलता है जो शायद 80 की दहाई में या 90 की दहाई में भी बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते थे। हैविंग सेड दैट, कुछ फॉर्मल मैकेनिज्म्स भी हैं, कुछ इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स भी हैं। ये हुकूमत जो है, और यू नो एवरी पाकिस्तानी वांट्स इट टू सक्सीड, लेकिन यही हुकूमत है जो स्टैंडिंग कमेटीज़ को नहीं बना पाई, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद वो कह चुके हैं कि कानून साजी हम करेंगे कि मीडिया की रेगुलेशन की जाए, एक नई अथॉरिटी बैठाई जाए और ये तमाम जो कवानीन हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। लेकिन इसी सफ़े पे आपसे उस बात पे एग्री करता हूँ कि ऐसे इकदाम इन्होंने लिए जिसके बारे में जिसकी वजह से मैं एक मुख्तसरन बिल्कुल, और मैं एक मुख्तसरन सी बात कर लूँ सर, वेयर आई एग्री कि फवाद चौधरी साहब और जो एक तरह की एक अनजस्ट क्रिटिसिज्म होती है, कानूनी तकर्रुरियाँ। अभी जो आपने अभी फवाद चौधरी साहब की पे क्रिटिसिज्म की बात की, चौधरी फैसल साहब जो अभी एडिशनल अटर्नी जनरल भी तकर्रुर हुए हैं, तो वो एक क्रिटिसिज्म हो रही है कि जी नेपोटिज्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग जिनका इस दायरे से चलें अगर ताल्लुक़ नहीं, तो थोड़ी सी रिसर्च कर लें और देख लें कि क्या इस शख्स के रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, क्या उसका तजर्बा है, क्या उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंसेज हैं। जब वो सारी चीज़ें हैं तो आप तब क्यों कहते हैं नेपोटिज्म? और ये आर्ग्यूमेंट मैंने की थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में थी, और वही आर्ग्यूमेंट उन्होंने अप्लाई की थी आसमा हामिद साहिबा पे कि जी शायद हामिद और जायद हामिद साहब क्योंकि वो रिश्तेदार हैं तो उनको गलत तौर पे एडवोकेट जनरल पंजाब बनाया गया था। वो भी एक प्योरली एक मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट थी। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपकी अपनी क्रिटिसिज्म में वो वजन फिर पाया नहीं जाता। तो आई थिंक थोड़ी सी रिसर्च के बाद आप इस साइड पे आए कि क्या मेरिट है एक तरफ या नेपोटिज्म है एक तरफ, स्पेशली जब आपकी कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो पिछले 30 साल से बच्चों के बच्चों पे अब चल रही हैं। नहीं असद, यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक किसी शख्स को इस वजह से सिर्फ आउट नहीं कर सकते कि वो किसी शख्स से लिंक्ड है, लेकिन वहां पर हमें ये बड़ी फाइन लाइन है जिसको हमें जिस डिस्टिंक्शन को रखना पड़ेगा कि कहीं हम मेरिट को कॉम्प्रोमाइज नेपोटिज्म की वजह से तो नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक, इसी पॉइंट पे वक्फा लेंगे और अगले समय बात करेंगे एंटी करप्शन डे जो मनाया जा रहा है, इसके साथ साथ नैब की कारकर्दगी कैसी रही है। रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आज दुनिया भर में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। चेयरमैन नैब का कहना था पाकिस्तान में हर शख्स एहतसाब चाहता है, मगर वही शख्स ये भी चाहता है एहतसाब के अमल में उसकी जानिब ना देखा जाए। अब उन्होंने कहा कि कुछ साल कबल एक शख्स के पास सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल थी, लेकिन आज उनके पास मुत्तहदा अरब अमारात में टावर हैं। अब अगर उनसे इस टावर के बारे में सवाल किया जाए तो क्या गलत है? चेयरमैन नायब ने वज़ीर आज़म से शिकवा भी किया और ब्यूरोक्रेट्स को बावर करवाया कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने। अब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार से उनकी मुराद क्या थी, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मगर पाकिस्तान में और कुछ हो या नहीं, एहतसाब ज़रूर होता है। मगर सवाल ये है कि एहतसाब अगर अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा तो फिर उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, और नैब के 21 अफसरान की लिस्ट में उन हीरों के नाम मौजूद क्यों नहीं जिनके मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को ओहदे से हटाया गया। उस पर भी बात करना ज़रूरी है कि नैब की कारकर्दगी को कौन जांचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म और अपोजिशन कोई भी नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं नजर आ रहे। जनाब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, खैर मुझे कभी टॉपिक ऑफ द मंथ नहीं सर, टॉपिक ऑफ द डेकेड है ये। वैसे ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैंने अनफेयर बात की कि जी मुतमईन कोई नहीं है। आप मुझे बता दें सर, जब से ये अदारा आया है 2000 में, 2000 से 2018 तक
क्या कोई ऐसा वक्त आया था कि लोग मुतमईन थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से, चाहे स्टेट से, चाहे सोसाइटी से? होते हैं जब आप जस्टिस डिलीवर कर रहे होते हैं या आप किसी को ट्राई कर रहे होते हैं तो लोग तब आपसे मुतमईन नहीं होते कि आप इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शायद ऑपोजिट केस है कि शायद इदारा डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसकी जो कारकर्दगी पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर उनको अपने जो एक्ट को बेहतर करने की जरूरत है। आज उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन नैब ने उन्होंने कहा कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। यहाँ पे उनको इस चीज से ज्यादा एहसास करना चाहिए कि उस प्रोपेगेंडा का जवाब देने का जो जरिया है वो भी उनके पास है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें। आप ना, अब देखिए आज जिस तरह का वो आपने एक तो जिक्र किया कि वो 21 अफसरान जिनकी बदौलत शायद एक बहुत बड़ा केस एक पाया तकमील तक पहुंचा था और एक कन्विक्शन भी हुई थी जिसको बाद में हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, उनके नाम नहीं है। इसका मतलब सेट असाइड नहीं सर, सेंटेंस को सस्पेंड किया। सॉरी, वो अभी पूरी अपील सुनेंगे। हाँ, सस्पेंड हो गया वो जल्दी में, मैं बोल गया। तो यह है कि अब नैब भी उनको सेलिब्रेट नहीं कर रही। और दूसरी तरफ कल का आप देखें फैसला शहबाज शरीफ का आशियाना केस में, जब उनका नैब की रिक्वेस्ट टर्न डाउन हुई कि उनका फिजिकल रिमांड को एक्सटेंड किया जाए, तो उसमें जज ने नोट किया कि ना तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन इनका लिंक साबित कर सकी कि इन्होंने कमीशन लिए, किकबैक्स लिए और ये सब कुछ। तो जब ये चीजें असद जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस कि जब ये चीजें बाहर आती हैं तो वहां एक तो पॉलिटिकल जो उनके ओपोनेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनका नैरेटिव स्ट्रेंथन होता है। और दूसरी बात यह है कि पूरा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो अंडर क्वेश्चन आ जाता है। उसमें लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जिसका बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग उसे ओन करें, अवाम ओन करे, वो अंडरमाइन होती है। इसमें कोई शक नहीं है। अफसोस होता है क्योंकि 90 की दहाई इस बात में वजन था कि आप अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स को वाकई में आप इंतकाम की सियासत उसके थ्रू ही कर रहे हैं। बेशक वो सेनेटर सैफुर रहमान साहब की कार्रवाई हो, बेशक जब शहीद मोहतरमा साहिबा को भी वही हुकूमत मिली थी तो विक्टिमाइजेशन हुई थी, मियाँ साहब की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी। लेकिन अगर ये हुकूमत सर जो 1996 में अपने सेंट्रल प्लैंक लेके आई थी कि जी एंटी करप्शन, एहतसाब, मुस्लिम लीग का ये मंशूर नहीं था, पीपल्स पार्टी का ये मंशूर नहीं था, जो बाकी सियासी जमातें हैं बाकी सूबों में उनका भी ये मंशूर नहीं था, तहरीक इंसाफ में जो लफ्ज ही था इंसाफ, उसकी जो जड़ थी वो इसी एंटी करप्शन ड्राइव से आती थी। तो एज यू सेड वेरी करेक्टली, आई होप कि जब हम 2023 में बैठे हुए हों तो ये हुकूमत उन तमाम जो हुकूमतों का एक फहरिस्त थी उसमें ये एक हिस्सा ना बन जाए, एक और सफ़ा ना बन जाए, अक्रॉस द बोर्ड करें। और आपने स्वाति साहब का हवाला दिया सर, उन्होंने कहा कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ ताकि मेरी जो मॉरल अथॉरिटी है वो इंटैक्ट रहे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पहले दिन ही ये इस्तीफा दे देते उससे बहुत फर्क पड़ता। जब आप रिचर्ड निक्सन स्टाइल आपको नजर आ रहा है आपके सामने कि जी इम्पीचमेंट इंडाइटमेंट होने वाली है, 62(1)(f) चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब फरमा रहे हैं कि जी शायद 62(1)(f) की तरफ जाना ही हो, तब आप मुस्तफी हो रहे हैं। दैट्स वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी, इट्स बैड फॉर योर नैरेटिव। आप नहीं कह सकते कि जी हम एक एहतसाब के खिलाफ एक ये एहतसाब की एक हुकूमत है। इस तरह आप यू मडी द वाटर्स। बिल्कुल। उससे अलावा जो खास तौर पे जो ये बात है ना कि किसी तरह से भी ऑपोजिशन को ये चीज़ आपको नहीं देनी चाहिए कि पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है। अब जैसे मैंने शहबाज शरीफ साहब के केस के बाद की, आपको बिल्कुल बड़े जैसे कहते हैं ना फूंक फूंक के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हाई प्रोफाइल केस होता है, कोई भी केस हो, आपको बड़े एहतियात के साथ प्रोग्रेस करना चाहिए। लेकिन हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से सबकी नज़रें उसके ऊपर होती हैं, और जब वहाँ पर आपको आपकी प्रोसिक्यूशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो गलत निकले, तो फिर उस वक्त सबके सब उंगलियां उठाते हैं कि देखें जनाब ये तो पॉलिटिकल विचंट होता है और हम इस नैरेटिव को नहीं सपोर्ट करते। लेकिन इस बात से थोड़ा सा हट के बाकर साहब आपकी इजाज़त के साथ मुझे जो बात अजीब लगती है ना वो ये, हम बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की और मुंसलिक उनको करते हैं आशियाना हाउसिंग स्कीम, साफ पानी, ये अब मेट्रो में इतनी लंबी चौड़ी बात हुई। जो एक्चुअल केस था मॉडल टाउन का जिसमें आपने 14 अशखास को इस तरह इतनी बेदर्दी से मारा था, उसकी बात नहीं हो रही। उसमें JIT की आपने रिपोर्ट, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो जस्टिस बाकर की रिपोर्ट थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो जस्टिस कासिम खान की लाहौर हाई कोर्ट में डिसेंट था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये जो एक फैक्चुअल नैरेटिव है कि आप उसे एक दिन पहले DCO को तब्दील कर देते हैं, IG पंजाब को आप तब्दील कर देते हैं, उसके बाद लॉ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड है कि जी आप ये कार्रवाई करें। उन तमाम चीज़ों के बावजूद शहबाज शरीफ साहब की जब बात की जाती है तो करप्शन,
आशियाना हाउसिंग स्कीम, आहत चीमा, इन लोगों के सिलसिले में मॉडल टाउन जैसा मैसेकर लाहौर शहर में सर बड़े कम होते हैं। यस आई फुली एग्री विद यू कि उसमें इनको ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए था, क्योंकि उसमें मासूम जानों का मसला था। करप्शन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो पूरे जिसे कहते हैं सोसाइटी के फैब्रिक का नासूर है, लेकिन जहां इंसान की जान का सवाल है तो वहां पर उसका हिसाब होना ज़रूरी है। लेकिन अब हम देखें कि सिर्फ पॉलिटिकिंग एक एंड पे नहीं हो रही कि या हम कहें कि जनाब हमारी सियासी जमात है वो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके खून के वारिस हैं वो भी उस तरह से फोर्सफुली उसको परसू नहीं कर रहे। अभी आपको याद है तारुल कादरी का स्टेटमेंट आया कि नहीं सर, आई टोटली सर, नहीं सर, वो कैसे करें और किस तरह करें, सारा आपने केस ही उनके FIRs पे बना दिया और फिर कहते हैं कि जी तारुल कादरी साहब वापस कनाडा चले जाते हैं। प्रोसिक्यूशन पे है सर, स्टेट पे है, आप तारुल कादरी पे खड़े कि जी वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। मैं कह रहा हूं कि उनको भी इसी तरह से विगरसली परसू करना चाहिए, पीछे हुकूमतें गिराने के लिए सड़कों पे होते थे। चलें इसी पे ही वक्फा लेंगे और अगले कुछ हिस्सों में कुछ खुसूसी इंटरव्यूज हैं बाकिर सजाद साहब ने कंडक्ट किए हैं, रहिएगा हमारे साथ। Assalamu alaikum. Welcome to Dawn News Special. This is Bakir Sajad, and today we are discussing developments in the telecom sector. Telecom industry has, over the past 4 years, shown some very impressive growth. This has been because of introduction of 3G, 4G, and LTE services. According to Pakistan Telecommunication Authority, today we have around 152 million subscribers of cell phone services, around 60 million users of 3G, 4G, and around 62 million benefiting from broadband services. Telecom industry has been one of the success stories in Pakistan, and today telecom industries are pushing Pakistan towards the digital century. Today, to discuss all these things, we have Mr. Sigve Brekke, the president and CEO of Telenor Group. Thank you for joining us. Well, thanks for having me. Mr. Brekke, we always say that Pakistan has a lot of potential, and that's quite true. But do you think Pakistan is ready to ride this wave of a digital wave? Ride this digital wave? Yeah, the short answer to that is absolutely. And two reasons for that, I will say. One is that the way we see the Pakistani people is that you are hungry for new services. You are hungry for innovation. You are hungry to try out new things. That is what has been driving the telecom sector so far. And that's also what's going to drive us into what we call the next wave, which is all about data connectivity and digital type of services. And even though the numbers that you quoted are high, you could, if you adjust for people having more than one SIM card, most Pakistanis have 2-3 different phones, then there is actually only around 55 to 60% of the population that have access to even basic services. So you have two types of customers. One is the ones that never have had a phone in their life, and we are still targeting them. That's why we are rolling out our networks deeper into the villages. And the other one, it's the ones that are used to using voice and SMS, but know what to try out data. And I really think that Pakistan, it's ready for that, and that there is a hunger with your people to try out those type of services. And how is your company, Telenor, planning to contribute to this digital transformation? Yeah, it starts with building a solid foundation, which is the network. So we are now launching our 4G network and rolling that out in all the base stations or the antennas that we have. Today, actually, we launched what we called 4.5G network, which is allowing you also to use the data network when you make a call. And that's the first operator in Pakistan that does that. So that base, it's our foundation. Then we put services on top of that. And the 2-3 services that we have been focusing on so far, it's the banking sector. Our Easy Paisa company is now having more than 20 million banking customers. And we want to scale that. We want to target all the
the population in Pakistan that doesn't have a bank account with this digital banking. And there is actually, the number shows us that there is only about 20% of your population that have a bank account with a traditional bank. We want to target the 8% that doesn't have that, such that they can send money digitally, such that they can save money digitally, such that they can also lend money through a digital solution. And now we are going to scale that up. We have just partnered up with Ant Financial, which is coming from China and is doing this successfully in China. And you signed this agreement, with Ant Financial. There was I think you called it your strategic partnership agreement with Ant Financial, and they would invest around $140 million in Telenor Microfinance Bank, and you want to improve your services. So now that agreement has been cleared by the Competition Commission of Pakistan. So what next? After that agreement has been cleared. What next is then that they will inject those money that you talked about in 2 tranches, first 70 million and then another 70 million US dollars later. And do we have a timeline for that? That will happen very soon. And then we will use those money to, as I said, scale up our services. And we want to target more than the 20 million customers that are already an EasyPaysa customer. And what we are really excited about, it's to move into, as I said, the microfinancing, also give micro loans and also saving solution. We are also working now with some consumer good companies like the Nestle, like the Udeliver and those type of companies to see can we also be involved in sending their money digitally and take away the cash inefficiency. So you will see us coming aggressively in the market with this type of solutions. So when you say that you are coming aggressively, and you have been in Pakistan for nearly a decade and a half, from that I can judge that you are pretty much satisfied with your stay here in Pakistan. We are also very excited about, and that actually agriculture services, to give the farmers a digital application, such that they digitally can check the weather forecast. They can, through their mobile phone, they can get harvesting advice. Through the mobile phone, they can check out what are the crop prices, and then they're not dependent on the middleman anymore. And we think that when we can get the farmers to use this digital tool, we can increase the productivity of the farming business significantly. That's another way that for us to really help with growing the economy. And I was asking about your investment experience. The investment experience, we are quite happy with being a foreign investor in Pakistan. We have been that for 13 years. We have invested around $3.5 billion US dollars so far. And I think we are among the very biggest foreign investors in Pakistan. But I'm using the word so far because we see more to come. And what we are going to continue to investing is in renewing our license, which is coming up next year, in May next year. It's to continue to invest in the network, but it's also to invest in some of these new digital applications, to trying to take a position in not only increasing our business, but also make inclusion, financial inclusion, health inclusion, educational inclusion. And we see the digital opportunity as a way to include everyone into the society, not only the ones that can afford and maybe live in the big cities. You are talking about expanding your services to a great extent, but when there are opportunities and telecom sector is thriving in Pakistan, like much like happening around the world, there are several challenges as well. Especially over the top services like WhatsApp, you have Skype and Viber. What impact do you see that for telecom sector in Pakistan? From what I've heard from you, you are diversifying your business, but some other players may be affected by this, the way over the top services. No, there are 2 answers to that. One answer is that all those services, they need connectivity. And we are the only one that actually are building that connectivity. I'm talking about our network. And we are the only one that also have a relationship to the millions of customers. So even though those digital providers will need us to distribute their services. But you are right.
We are moving from a situation where we actually provided all the products to our customers when they only use SMS and voice. Now we need partnership. And we really would like to be partner with some of those guys. We are partnering with Ant Financials on financial services. We hope to be partnering with someone on the e-commerce space. We hope also to now build partnership in all those new entrepreneurs that comes up with the new ideas. But then we cannot be alone anymore. We need to split the profitability, and we need to do it together. And that is a new business model for us as well. So your message is diversification to survive in the challenges that are coming. And partnership. We'll take a break here, and when we return, we'll continue discussing some of these issues. Welcome back. We are discussing some of the developments in the telecom sector and hearing Telenor's perspective from Mr. Brekke. Mr. Brekke, as you said before the break, that Telenor is, like many other cellular companies that are operating in Pakistan, are due for the renewal of their licenses. So how are you foreseeing this process to go ahead? And you met Pakistan's leadership during your visit. You have met the Prime Minister, you have met the Finance Minister, as well as the Foreign Minister. So what's your suggestion? How should this process play out? Do you want more facilitation in this process? I wouldn't use the word facilitation, but I would use the word partnership here as well. And the reason I'm saying that is that the Pakistani government also have a digital agenda. They also would like to have digital inclusion, meaning having people to have financial solutions, as I talked about, and also using digitalization in the public sector, like in the health sector, like the educational sector, but also to grow the business. And to do that, they need us, which means that we should have a partnership where they see that this is a win-win situation. And then they should put some obligations on us, rather than just maximize what they are charging for those licenses and the spectrum. And that is the discussion we have. Put some rollout obligation on us, for example, such that we are obligated to cover all the villages. Put some service obligations on us, such that we are obligated to actually launch services. But do not try to maximize the charging for those type of services, because in the end we have seen that from other markets, then the appetite to invest goes down, and the ones that suffer is the consumers. So that is the dialogue we have had with the government representatives. So what kind of assurances were given to you, or what did the Pakistani leadership tell you about the coming days? Were they able to reassure you that better days are ahead? Well, I'm pleased to hear that this government wants to be seen as a business-friendly government. That was clearly spelled out. I'm also happy to hear that they appreciate what we have done so far in this country as a foreign investor. And I'm very hopeful that we'll be able to find that win-win partnership going forward, where both the societies, but also us from a business point of view, could benefit out of it. Another example is that, again, together with the government, we are helping to give people that do not have an ID, their first ID number. So together with UNICEF and the local government, we go out in the villages, we talk to the children and their parents, and then we have developed an app whereby you put in the ID numbers of the parents, send it to the central database, and back come the ID numbers to the kid. And there are a lot of children out in those villages that don't have an ID. This is another example of us not making money out of that, but being a part of helping the government with their policies. So I will say that we are quite deeply embedded into some of those services. And we see this because we want to be seen as a responsible company, which is a part of the solution, not a part of the problem. And coming to your human resource, you are employing around few thousand people here, direct employment that you are providing. So how are you developing their capabilities, and are you benefiting from them outside Pakistan as well? Yeah, the last question first. Pakistan is the talent hub of Telenor. We are operating in 8 markets across Europe and in Asia.
And this is where we are grooming most of the talents and sending them into other markets. We have Pakistanis in Bangkok, in Kuala Lumpur, in Yangon, in Myanmar, and in Norway, in Sweden. They're all over the place. And this is where we get all those talents. So in that sense, this is our talent pool. The way we are grooming them is that we are spending quite some time on education. For example, a year ago, I gave all our 22,000 employees across the globe a challenge. I said, we want you to take at least 40 hours off your daily work, not your free time, your working time, to study something new, at least 40 hours. And we gave them 5 areas that we think that is necessary for us in the future. And then we provided them with courses. And to my satisfaction, people have really taken up this offer. And the people have now really spent a lot of their time in the working hours to learn something new. And this is a way for us to make sure that our employees are also ready for the future competences need. Mr. Brekke, we have been talking about the impressive growth that the telecom sector has shown, and especially your company. So that means that they are earning a lot of money from the people. They certainly pay taxes and they charge for the services. But what are these telecom companies, and especially Telenor, giving back to this society? Yeah, I think that's a very good question. And in our vision, we actually say empowering societies. And this is not about donation or about us being nice. It's about a license to operate. That's the way we look at it. Because the only we can build a sustainable business is to be seen as a part of growing the societies. So it's much more than just making money from the business that we are in. So let me give you a couple of examples. We are together with the local government now running a pilot where we are making birth registration digital. So we go into the villages. We started in Punjab together with UNICEF, and then we met all the children that don't have an ID. And then we have an app where you can put in your parents' ID number, send it to a central database, and back comes your ID number. And we have found this as very important, because then the government can use that accurate number of people living in those villages for their school planning and for their health services. That's one example. Another example, it's trying to be a part of bringing the classrooms out to the villages over the mobile phone, so digital way of spreading education. And we think that there is a long way to go in some of these areas. And that is 2 examples of what we try to do to be a part of making this a better society. Mr. Brekke, thank you very much for sparing time to talk to Dawn. And we are really encouraged by the kind of resolve that you have to expand your services in Pakistan. Wish you good luck.